Hello everyone, this is Shatarupa and welcome back again to Campusmonk. So last class we were studying about big O notations जहाँ पे हमने देखा कि हम functions use करके कैसे big O notation we can take out कि what is the worst time complexity. We learned many rules that obeyed big O laws and कैसे हम लोग उसको use करके एक गिवन फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि वर्स्ट केस विच इज़ द बिग ओ वो निकाल सकते हैं. उससे पहले हमने देखा था कि व्हाट आर एसिम्प्टोटिक नोटेशन. उससे पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे थे, राइट. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड ऑल दीज वीडियोज़ गो चेक आउट द यूट्यूब चैनल ऑफ कैंपस मॉन्क. वहाँ पे सारे के सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ से पढ़ लो फिर इधर आओ, नहीं तो दिस वुड लीड टू अ डिसकंटिन्यूएशन. सो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वी लर्न अबाउट सर्टेन गाइडलाइंस ऑफ बिग ओ नोटेशंस and about pointers. Pointers, as you all know, it's a very important concept, but we'll take it from the scratch. So पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ guidelines for big O notations. अब ये guidelines होती क्या है? जैसे there are certain fixed things for which the big O notation is always going to be fixed. इसका मतलब big O made easy. आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको हर चीज़ से big O निकालना नहीं पड़ेगा कि अगर आपको उस फॉर्मेट में कुछ दिख जाए तो डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हो कि दिस विल बी दी वर्स्ट केस, दैट इज़ ईदर बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन स्क्वायर और बिग ऑफ एन लॉग एन और वट एवर इट इज़. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज़ द बेसिक थिंग, दैट इज़ द लूप्स. सो यानी कि फॉर लूप. अब यहाँ पे अगर देखोगे इन दिस फॉर लूप इट सेज आई इक्वल टू 1, I less than equal to n and I plus plus. This means that this loop will execute how many times? Of course it will execute n number of times because of this n, right? So what will be the time complexity of a single for loop that is running for n number of times? It will be big O of n. तो अब आपको कहीं पर भी for loop दिख जाए with a single statement like this, जहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर लूप है ऐसे वाला, तो और इट्स रनिंग फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी द वर्स्ट केस विल बी बिग O ऑफ n. ओके, मूविंग अहेड विद द सेकेंड वन, दैट इज़ द नेस्टेड लूप. अब वो तो नॉर्मल लूप था, सिंगल लूप. अब अगर नेस्टेड लूप है मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, राइट. It so happens in different cases when we have 2D arrays और कोई और सीन हो गया तो फिर we have a lot of cases जहाँ पे हम लोग nested loop यूज़ करते हैं, right? So अगर वैसा सीन है तो फिर क्या होगा? तो this loop, this first one, the outer loop will run for n number of times. The inner loop will run for n number of times. That means the loop that is running for I will run for n number of times. The loop that is running for j will run n number of times. ओके. सो अगर दोनों लूप n टाइम्स रन कर रहे हैं तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, n इंटू एन विच इज़ नथिंग बट n स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप्स? फॉर एनी नेस्टेड फॉर लूप द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑलवेज बिग O ऑफ n स्क्वायर. तो कहीं पर भी आपको अगर नेस्टेड लूप दिख जाता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज़ बिग O ऑफ n स्क्वायर. अंडरस्टैंड दैट बिग O ऑफ n स्क्वायर is the worst time complexity. ठीक है. If you have any code, if you have written any code where you have to write the time complexity of big O as big O of n square, कहीं पर भी अगर किसी कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे नेस्टेड लूप के वजह से बिग O ऑफ n स्क्वायर आ रहा है, देन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपने जो कोड किया है वो एक बहुत ही ख़राब कोड है इन कंपेरिजन टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो ऑलवेज ट्राई रिड्यूसिंग दैट कॉम्प्लेक्सिटी. इधर उसको बिग ऑफ n करो या फिर बिग ऑफ n लॉग n करो या बिग ऑफ लॉग n करो, कुछ भी करो, बट इट शुड नॉट बी इन बिग O ऑफ n स्क्वायर. सो दैट इज़ नोन एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड. तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है. फिलहाल इतना याद रखो कि अगर नेस्टेड लूप है और उसका एंड उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n स्क्वायर ही आता है. एंड सपोज आपके पास n स्क्वायर दिया गया है एक कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देन दैट इज़ द वर्स्ट केस ऑफ द वर्स्ट केस. ठीक है. जनरली n स्क्वायर नहीं आना चाहिए. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड इज़ द कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स. अब एक सेट ऑफ कोड है हमारे पास. ठीक है. ये देखो, दिस इज x इक्वल टू 2, देन इंट i, देन x इज इक्वल टू x प्लस 1, देन देर इज़ अ फॉर लूप एंड देन देर इज़ अ नेस्टेड फॉर. तो क्या हो रहा है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 2, दिस विल रन वंस, राइट. देन इंट i, दिस विल ऑल्सो रन वंस. देन x इज इक्वल टू x प्लस 1, दिस विल ऑल्सो रन
1 टाइम. सो टोटल ये 3 चीज़ कितनी बार रन करेंगे? इट इज़ अ कांस्टेंट, राइट? इट इज़ गोइंग टू रन इंडिविजुअली, इट विल रन वंस, एंड टोटल इफ आई डू, इट इज़ 1 + 1 + 1, दैट इज़ 3. ठीक है. Now there is one for loop, normal for. So if it is running for n number of times, what will be the complexity? It will be n. And then there is a nested for, right? So what will be the complexity of this? N square. So how will I find the time complexity? The time complexity Tc is equal to n square plus n plus 3, which is equal to. अब अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? तो क्या हम बैठ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे? नो. ऑलवेज कंसिडर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज द हाईएस्ट पावर ऑफ n. ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ n है, दैट विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So what will be the time complexity of this given code? The time complexity of this given code will be big O of n square. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्या है, एक n square आया from the nested loop. From one single for loop we got n, and from the 3 statements we got a constant 3. तो highest power of n कौन है? n square. So this is going to be your time complexity, big O of n square. वाई दी हाइएस्ट पावर? क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस निकाल रहे हैं, राइट? तो वर्स्ट केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फंक्शन n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस? जहाँ पे n का पावर हाईएस्ट होगा, दैट विल बी दी वर्स्ट केस, राइट? सो अगर मैं सिर्फ n कंसिडर करूँ, अगर n स्क्वायर हो गया तो कोड और भी बिगड़ जाएगा. सो आई हैव टू ऑलवेज कंसिडर इन द वर्स्ट केस, दैट इज बिग O, द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ n, जो है n स्क्वायर. क्लियर? मूविंग अहेड, इफ एल स्टेटमेंट. तो हमको लगता है कि इफ एल स्टेटमेंट का कभी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकता, राइट? पर कभी कभार इफ एल स्टेटमेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है. कैसे? इफ़ यू लुक इनटू दिस कोड, राइट? कोई मैंने इंटीजर वैल्यू लिया है n, एंड देन आई एम कंपेयरिंग इफ n = 0. तो फिर अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट? नाउ देयर आर 2 केसेस. अगर इफ इज ट्रू, इफ़ अगर ट्रू हो जाता है, तो इफ़ के अंदर क्या है? सिर्फ n = 0. सो ये कितनी बार चलेगा? ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, राइट? और एल्स वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो बस रीड करेगा. सो दैट विल ऑल्सो रन वंस. इफ़ इन हियर आई एम कंसिडरिंग दैट इफ़ इज सेटिस्फाइड, इफ़ का कंडीशन ट्रू हो रहा है, राइट? तो फिर इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? इट विल बी 1 and 1, इफ़ का 1 एंड एल्स का 1. यहाँ पे ऐड करके 2 मत लिख देना, ठीक है? if का 1 and else का 1. So we are calculating time complexity. So in this case both are 1, both are constant. So what will be the output? It will be big O of 1, right? But अगर if condition false हो गया, right, and else condition is satisfied, तो if condition कितनी बार चलेगा? It will run 1 time. और अगर else condition देखो तो इसके अंदर एक for loop है, right? This for loop will run for how many times? For n number of times. So मेरा time complexity क्या होगा? 1 plus n. Again, big O to the highest power of n. What is the highest power of n? This. So what is the time complexity? If the else part is executed, the time complexity will be big O of n, right? Similarly, अगर ये for loop else में ना होके if में होता, तो अगर if कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द if कंडीशन वुड हैव चेंज फ्रॉम अ कांस्टेंट टू बिग O ऑफ n, राइट? सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. नाउ दीज आर द सर्टेन गाइडलाइंस, जो रूल बुक होता है उसमें ये रूल्स दिए गए हैं. सो आप जहाँ पर भी एक नॉर्मल लूप देखोगे विच इज़ रनिंग n टाइम्स, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ n. इफ़ इट इज़ रनिंग हैविंग अ नेस्टेड लूप, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ n स्क्वायर. और अगर कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट है, वी जस्ट सॉ हाउ टू टेक इट, राइट? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ n. और इफ़ एल्स है तो इट डिपेंड्स कि कौन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? वन मोर थिंग, अगर 2 फॉर लूप ऐसे हैं तो फिर उस कोड का इट्स नॉट नेस्टेड, वन आफ्टर द अदर, वन लूप ओवर हियर एंड अदर लूप ओवर हियर, ठीक है? एक के बाद एक है, तो ये n टाइम्स चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा. सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 2n. इट वोंट बी n स्क्वायर, ठीक है? n स्क्वायर सिर्फ नेस्टेड लूप में होता है. क्लियर? गुड. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर इज द पॉइंटर्स. तो पॉइंटर्स क्या होता है ना? पॉइंटर इज सिंपली अ वेरिएबल
जो स्टोर करता है एड्रेस, मेमोरी स्टोर करता है, ओके, एंड इट पॉइंट्स टू दैट मेमोरी लोकेशन जहाँ पे उसके वैल्यूज़ रखे हुए हैं. Clear? A pointer is a variable that stores the memory address of another variable. Right? मतलब like a treasure hunt. Okay? Suppose आपके हाथ में एक clue है. In that clue, it is written another clue where you can find the next clue. ठीक है? That is what the pointer is. ठीक है? मतलब pointer say star ptr. It stores what? It stores the address of say variable v, and this var has the value of 10. So what will this pointer point to? This pointer will point to the location of var which is storing the value of 10. That is pointer. Why is it named pointer? क्योंकि वो point करता है, इसीलिए उसका नाम pointer है. So pointer is a variable that stores memory address of another variable and its values. ठीक है. अब हम लोग 4 टाइप ऑफ पॉइंटर्स देखेंगे. 4 टाइप ऑफ पॉइंटर्स. फर्स्ट void pointer, सेकेंड null pointer, थर्ड dangling pointer and fourth wild pointer. ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन फर्स्ट, दैट इज void pointer. एज द नेम सजेस्ट void, तो void हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं करते वहाँ पे हम लोग void यूज़ करते हैं, राइट. सो अ पॉइंटर विच हैज़ नो डेटा टाइप एसोसिएटेड and can point to any data of any data type. मतलब इन फ्लोट डबल किसी चीज़ को वो पॉइंट कर सकता है, but that pointer has to be typecasted. You directly cannot dereference that pointer. So that is known as a void pointer. Void pointer के 2 point. पहला, it has no associated data type, so it can point to any data of any data type. ठीक है. Second, it has to be typecasted to any data type. ठीक है. हम directly उसके values fetch नहीं कर सकते. We need to typecast it. Clear? Now, this thing over here, it says that int main I equal to 10 star ptr and I, right? So क्या कर रहा है? It is pointing to a address of I. ठीक है. Now in this statement, do a correction. It should be star int star ptr. ठीक है. The star is missing, so just a rectification over here. So it should be something like this, percentage d. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. ये वाला करेक्ट कर लेना. ठीक है. सो अब क्या करेगा ये जो स्टार इंट स्टार ptr है, what will this do? This part, it will, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं. वी डायरेक्टली कैन नॉट फेच द वैल्यू, वी नीड टू टाइप कास्ट इट. ठीक है. वो पॉइंट किसी भी टाइप ऑफ डेटा टाइप को कर सकता है. यहाँ आई इज़ एन इंटीजर, डबल फ्लोट, एनीथिंग यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट. इट कैन पॉइंट टू दैट डेटा टाइप, बट यू नीड टू टाइप कास्ट इट. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं. क्लियर? नाउ व्हेन वी टाइप कास्ट दिस, तो इसका वैल्यू क्या रिटर्न होगा? इसका वैल्यू विल बी रिटर्न्ड एज 10. ओके. The value over here will be returned as 10. But what if I directly try to dereference it? If I directly try to dereference it, we cannot directly do that. ठीक है. Dereferencing a pointer directly is not allowed. इसका मतलब अगर मैं सिर्फ स्टार ptr लिखती हूँ like this, it will throw an error. ठीक है. If I directly write it like this, it will throw an error. Why? Because I'm directly trying to dereference, I'm directly trying to fetch the value of this ptr, which is not allowed in case of a void pointer. In case of a void pointer, you directly cannot dereference it. ठीक है. तो ये कोड आपको एरर थ्रो करेगा, राइट. नाउ तो फिर हम लोग ये void pointer यूज़ क्यों करते हैं, राइट. हम void pointers बेसिकली यूज़ करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए. द फंक्शन दैट इज़ malloc एंड calloc, these inbuilt function, they allocate memory at what time? Since it's a dynamic memory allocation, तो कब करेगा? रन टाइम पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट. सो these function can allocate memory of any data type.
विदाउट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड. वो चाहे इंट हो, डबल हो, फ्लोट हो, वो किसी को भी मेमोरी एलोकेट कर सकता है, ये बिना जाने कि वो किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, राइट. देयर बाय वी यूज void pointer. The use of void pointer is the built-in function malloc and calloc function which allocate memory during runtime returns void pointer. क्यों void pointer return करता है? Because it does not bother about कि कौन से kind of data is stored. उसका काम है बस runtime में memory allocate करना, right? तो वो उस time पे memory allocate कर देता है even without knowing the type of data that is being stored. This is why we need void pointers, right? So what are void pointers? Void pointers are pointers which has no associated data type and it is mandatory to typecast that pointer. Clear? Now, moving ahead to the next type of pointer, that is a null pointer, right? So as the name suggests, null, that means zero. उसके अंदर कुछ नहीं है. इसका मतलब this pointer is initialized to a invalid memory location, right? So this is a very special type of a pointer. So जब भी pointer में कोई value assigned नहीं होता है, we simply will write that star ptr equal to null. ठीक है. You can either use null, you can either use zero, but when you use zero, that is not referring to the integer zero. इतना बात आप ध्यान में रखो, ठीक है. But it is always advisable to use null, null. It looks good when you write it in the code, ठीक है. Star ptr equal to 0, at times you might confuse it with integer 0, ठीक है, as if star ptr has been initialized with the value of integer 0. So don't do that. So writing null is always a good practice. So let's see what is a null pointer. A pointer that does not point to any memory location, or rather it represents an invalid memory, ठीक है. Invalid memory जब represent करता है, that is known as a null pointer. It is a very special type of pointer where null is the value that is assigned to the pointer, ठीक है. यहाँ पे null क्या हो रहा है ना, null is a value that is assigned, ठीक है. You can either use null or zero as the value. Here zero does not refer to the integer zero. Integer zero को refer नहीं करता है, but it is always better advisable to use null as the value. If you see here, int main, int ptr equal to null. So मैंने क्या किया, ptr I assigned the value of null. That means this star ptr or only ptr is our null pointer, right? Now very simple, वो समझना बहुत easy था. Now why do you actually need a null pointer? There are 4 points that actually says that why you need a null pointer. First, it's used to initialize a pointer when there is no memory allocated, ठीक है. Suppose there is a there's a pointer but the malloc has yet not assigned a value, yet not assigned a memory location. तब तक वो pointer क्या करेगा, उसमें क्या store होगा? It's better that it stores a null value. कुछ नहीं है उसमें, ठीक है. Now what is the second thing? It is useful for handling errors while using this malloc function. जैसे कि मैंने बोला कि अब अगर malloc ने कुछ value return नहीं किया है but still that pointer exists, right? So it cannot point to any unidentified location. So it is always advisable to make sure that it has null value stored in it, ठीक है. The size of the null pointer depends upon the platform that you are using, but the size is often same as the normal pointer. Now how does it refers to the size? देखो, for example int main, this is ptr null, right? So if I print this star ptr, my output will be 0. Okay, my output will be 0 because it's null, so the value of null is 0. Now how do I find out the size of this null? So if I just write down size of null, it will give me 8 in my compiler, right? So it depends upon the platform that you use. It might be 4 in some platform as well, ठीक है. So it depends, but the size of this null is always equivalent to the size of this ptr. Okay, the normal pointer का जो size है वो ही null का size है, right? But it often depends from platform to platform. Fourth use is always remember this, that before you dereference any pointer, if you dereference any pointer, before that you must
perform a null check. Okay, before dereferencing any kind of pointer, you must have a proper null check. If the pointer is not assigned to null, that means उस pointer के अंदर कुछ है. So always perform a null check that acts as a barrier for us, that we are not surprised कि ये कोड ऐसे क्यों रन कर रहा है अगर मैंने इस पॉइंटर को हटा दिया था. Right? So always put a null check. ptr is equal to null. You need to assign that. ठीक है, अगर वो असाइन कर देते हो, दैट मीन्स दैट द नल चेक दैट यू आर पुटिंग एट द एंड ऑफ द यूज ऑफ योर पॉइंटर्स. राइट नाउ इसके अलावा वी हैव मोर pointers, but before moving to that, Campusmonk app is always there to help you out at the toughest time. So download this app. It's available on Play Store and App Store. The link is in the description. You get an ample of mock test to solve from. You get to know where you stand. There are live interactive sessions for all the courses, and you can choose one of the best course that will fit into your skills. That may be technical, aptitude, or anything that you want to. You want to improve your skills in the field of technical, you want to improve your skills in the field of aptitude, or may that be verbal. There are ample amount of questions and mock tests that can drive you through this placement season. So don't waste time. It's already late and we need to crack some exams, right? So Campusmonk app is always there, so get it downloaded right away. Moving ahead with the third pointer, that is the dangling pointer. What does this dangling pointer means? This dangling pointer means a pointer that keeps on dangling around. वो डांस करता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं है कि कहाँ पे पॉइंट करना है. ओके, सो अ पॉइंटर दैट इज़ पॉइंटिंग टू एनी नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन. कोई भी फालतू अनाप शनाप मेमोरी लोकेशन को जो पॉइंट करता है, दैट इज़ नोन एज द डैंगलिंग पॉइंटर. ओके, so that is the actual definition. Now let's look into this example. You really don't have to bother कि ये क्या हो रहा है. malloc size of int, just don't bother about that. Understand that malloc is going to return a memory location to this ptr, right? अब मैंने ptr को memory location allocate कर दिया and I started doing my codes. ठीक है, after my ptr has been used, what do? I free ptr. You don't have to even know कि free कहाँ से आ गया, what is it, what not. ठीक है, free is a command that will empty your ptr, right? Now my ptr is empty, उसमें कोई memory location नहीं है. ठीक है, the memory location that ptr was holding, उसने उसको release कर दिया the moment I write down ptr free ptr. ठीक है, now this memory location is released, but the ptr जो variable ptr है वो अभी भी available है. ठीक है, वो destroy नहीं हुआ है. So this ptr will now refer to what? Any random non-existing memory location को वो refer करेगा, इधर उधर भटकेगा, उसको कुछ तो चाहिए, कुछ तो करेगा, right? So this ptr is called a dangling pointer. ठीक है, so इसका solution क्या है? ये नहीं होना चाहिए. This is a very bad scene. This should not happen. So what should you do? Once you free the ptr, always set ptr to null. Now when you assign it to null, this is what is known as dereferencing a pointer having a null check. ठीक है, आपने ptr को फ्री किया और फिर आपको एक null check लगाना पड़ेगा that ptr is equal to null. Now this ptr is no more a dangling pointer, क्योंकि अगर dangle करेगा तो किसी ना किसी लोकेशन को पॉइंट करेगा. It might so happen that it might lead to certain segmentation fault. कभी कभार प्रोग्राम abruptly terminate भी हो सकता है, right? So we don't want those kind of scene. So इसीलिए we need to free ptr and then assign ptr to null. Now this ptr is no more a dangling pointer. Normal null pointer बन गया. अब ठीक है, आपका वो जो null check था, the last point before dereferencing a pointer, always have a null check. This null check it was talking about. ठीक है, always assign it to null. तो उससे क्या होगा कि ठीक है, अब मेरा ptr सही है, my pointer is no more in use, the value is stored in it is 0. ठीक है, किसी भी memory location को वो रेफ़र नहीं करता है. दिस इज़ वॉट इज़ अ डैंगलिंग पॉइंटर. नाउ कमिंग डाउन टू द लास्ट पॉइंटर, जो बहुत ही नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ अ वेरी वियर्ड पॉइंटर, दैट इज़ नोन एज वाइल्ड पॉइंटर और अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी शार्प डिफरेंस, बहुत ही एक शार्प डिफरेंस है बिटवीन वाइल्ड पॉइंटर एंड डैंगलिंग पॉइंटर. इज़
While pointer refers to any non-existing memory location. Dangling pointer refers to any non-existing memory location, while pointer refers to an arbitrary memory location. किसी भी random memory location को refer करता है. This often leads to crashing of a program, crashing of a code. We say no, crash कर गया मेरा code, right? So what is it? At times the pointer is not working or functioning properly, right? So what is this while pointer? While pointer is also known as uninitialized pointer. ठीक है, जब आप किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करते हो तब वो एक वाइल्ड पॉइंटर बन जाती है, राइट? That means, for example, if I take this star p, it is uninitialized, right? So it must be pointing to some illegal memory location जो उसका है ही नहीं. Now what am I trying to do? I'm trying to dereference it and access the value stored over there. मैं directly star p is equal to 10 लिख रही हूँ, right? I'm trying to store that value. So अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगी, it will lead to segmentation fault. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर रेफरिंग टू सम रैंडम मेमोरी लोकेशन. मुझे नहीं पता कि उस मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम डायरेक्टली ट्राइंग टू डीरेफरेंस दिस पी पॉइंटर एंड असाइन अ वैल्यू 10. सो दिस इज समथिंग वी शुड अवॉइड. ठीक है, तो एनी अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर is that is referring to certain arbitrary memory or illegal memory or random memory location is called as a wild pointer. ठीक है, so how to avoid this? First of all, initialize it with a known address. If you initialize it with a known address, then what will happen? It's very simple. Once you initialize, it will not be an wild pointer, it will not be an uninitialized pointer. So var 10 then star p. Now I have initialized it with an integer value, right? So I know that this integer will have a perfect location. ये कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगा. तो मैं अगर var का एड्रेस स्टोर करती हूँ p में, so I am sure कि this var will have some memory space. So this is not a wild pointer and it contains the address of an integer variable. ठीक है, so this is how you initialize it to known addresses. ठीक है, and one more way is there that you explicitly allocate memory and add value to that memory. How will you do that? Star p int star malloc, forget about this size of int, whatever int it is. Okay, now you adding that value, you are explicitly doing it through malloc. ठीक है, malloc के थ्रू आप इसको एड्रेस एलोकेट कर रहे हो, उस एड्रेस में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो. इसका काम हो गया. व्हाट यू डूइंग, यू राइट फ्री p, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लिसिटली ऐड value or allocate memory to a pointer to avoid situations where it arises to be a wild pointer or an uninitialized pointer, so that you can avoid crashing of a program or the segmentation faults, right? So with this we have come to the end of all the 4 pointers. We have got to know about the wild pointers, we have got to know about the dangling pointers, we have got to know about the null pointer, and of course the void pointers, right? Apart from that, we did see there are certain guidelines that help us understand how easily we can get through all the big O notations, right? So I request you all to please go through all the lectures that we have assigned or aligned for data structure, because it is from the basic to the scratch. After this, we'll be learning more about arrays, linked list, stack and queue. We'll see how they are effective in handling data structures. So if you haven't yet subscribed to the Campusmonk YouTube channel, do go and subscribe it. There are a lot of videos that are lined up. I'll see you next time with something new in the session, and until then, keep learning. Thank you.